lecture number 2, number systems ये हम पढ़ रहे हैं. Now we will continue with number systems, and this time we are going forward after denary and binary conversions to hexadecimal. सबसे पहले जो है हम hexadecimal को देखते हैं. तो हमारे पास जो hexadecimal number system है, इसमें हमारे पास digits होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So basically इस नंबर सिस्टम में एज एन आपको मैंने बताया था कि डेनरी को डेसिमल भी कहते हैं, तो दिस इज़ बेसिकली डेनरी नंबर सिस्टम, यानी कि दिस इज़ बेस 10 और हेक्सा मीन्स दिस इज़ 6 एडिशनल 6 डिजिट्स. तो ये हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाता है वो हो जाता है 16, 0 to 15. सो काउंट ऑफ यूनिक डिजिट्स इज कॉल्ड व्हाट? बेस. ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो यहाँ पर देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो नंबर्स हों वो 0 to 9 में ही हर जगह बन जाएं. ये जो पर्टिकुलर नंबर सिस्टम है, दिस नंबर सिस्टम इज़ ऑल्सो मेड फॉर कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स इसको अंडरस्टैंड करते हैं और ये बहुत कंप्यूटर्स के साथ पॉपुलर नंबर सिस्टम है. इस नंबर सिस्टम की बेस जो है दैट इज़ 16, 0 to 15. आप देखें बेस क्या है? काउंट ऑफ यूनिक डिजिट्स यूज्ड. अब हमारे पास यहाँ पे जो डिजिट्स हैं हेक्साडेसिमल डिजिट्स, वो कितने हैं? डिजिट काउंट हमारे पास यहाँ पर है 16. सो दिस इज़ बेसिकली बेस 16. तो जो बेस होती है वो दैट इज़ द काउंट ऑफ यूनिक शेप्स वी यूज़ फॉर डिजिट्स इन अ नंबर सिस्टम. तो जब बेस 16 करनी है तो 9 के बाद हम 10 के लिए 1 0 नहीं ले सकते, बिकॉज दैट वोंट बी यूनिक, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी मेड विद 1 and 0 and 1 and 0 आर ऑलरेडी काउंटेड. सो they borrowed characters, shapes from alphabets, but these are not acting as alphabets over here, rather they are acting as digits. One cheese that you have to actually remember is that when a number system changes, the representation changes, count never changes. So if it is 5 in Urdu, if it is 5 in English, or it is 4 in another language, 4 in another language, 4 in another language, that does not make any difference. 4 remains 4, only the representation gets changed. So what you need to understand is that number or count never changes. What changes is shape. Since the base of this number system changes, so we would have so many different experiences over here. So what is the base? 16. So one thing that you would have to remember, that basically this is 10, this is 11, this is 12, D is 13, E is 14, and F is 15. So whenever you come across 10, 11, 12, 13, 14, 15, instead of 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, we will be using A, B, C, D, and E and F. So that is what it is. Now let's see, there is a question: what is the largest single आंसर इज इट इज़ 15. ठीक है, और 15 को हम यहाँ पे एज सब स्क्रिप्ट जब 16 लिखते हैं तो ये बेस शो करता है. सो दिस इज बेसिकली 15 इन आवर नंबर सिस्टम डेनरी, जिसकी बेस 10 है. सो व्हाट इज द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? 15. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ बिट्स required to store 15. So answer is 4 bits. So it means ke how 15 is 1 2 4 8 8 and 4 12 and 2 14 and 1 15. So how many bits a byte has? 8. How many bits are required to represent the largest single digit of hexadecimal? 4. That 4 means that 0 to 15, all the numbers, all the digits can be accommodated in 4 bits. So it means that we can accommodate easily 2 hexadecimal digits per byte. And we already know about the restriction of having 8 bits at least to save, or multiples of 8 bits. So it means that a byte can accommodate 2 hexadecimal digits. Now let's get back to what we did last time. अब देखें, एक सिंपल सी चीज़ है, जब हम इन सारे बिट्स को एक साथ 8 के 8 बिट्स को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास जो है
वो डेनरी नंबर बनता है। लेकिन अगर हम 4 बिट्स को एट अ टाइम कंसीडर करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल डिजिट बनाना चाहते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर बनाना चाहते हैं, तो फॉर दैट केस हम यहाँ पे इसी नंबर को डिवाइड कर लेंगे दो हिस्सों में, 4 बिट्स ऑन द राइट, 4 बिट्स ऑन द लेफ्ट. Why 4 bits? Because that represents one hexadecimal digit. And this time, instead of looking into it with complete 1, 2, 4, 8, 16, 32, we would rather look it as 1, 2, 4, 8 and 1, 2, 4, 8. So this is 1, 2, 4, 8 and 1, 2, 4, 8. These are two hexadecimal digits. Same number, same binary number. So let's do it. This is 2. If we convert it, so this is 2. This is basically 3. So let's convert it. So this 3 2 is basically not 32, because that 32 represents denary 32. So we will rather call it what, 50. So this 3 2 basically is representing what, 50. So let's solve the next one. So this is basically 4 on the right and 6 on the left. So 100 is 6 and 4. Remember, count never changes. What changes is shape. Why? Because of the reason that the number system has got changed, because of the reason that the base is changed. So now 15. So this would be 0 and F. All right. On the right side, this is 8 and 4, 12 and 2, 14 and 1, 15. So this is how we represent 15, and this is 0. 31. So this is F and this is 1. So this is basically 1F. 1F is basically not called 1F, rather it is called 31. So this is 3F. This is 1, 9. This is 9 and 6. So this is 31, this is 127, this is 25, and this is 150. So how do we convert all numbers across? उसको हम इस तरह कुछ करेंगे कि let's say अगर आपको डेनरी से बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128 रखेंगे, और इस साइड पे हम हेक्साडेसिमल करते हैं. So if you have to convert from a binary number to hexadecimal, तो हम लोगों को क्या करना है कि 1, 2, 4, 8 और 1, 2, 4 और 8 यहाँ पे रखेंगे. हम we will look it as 2 hexadecimal digits. और अगर हमें डेनरी करना है तो हेक्साडेसिमल के लिए हम ये यूज़ करेंगे 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, और अगर डेनरी करना है तो हम 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 यूज़ करेंगे. So if it is binary to hexadecimal, then this will become 7E. This is 8 and 4, 12 and 2, 14. So this is E, 14, E, 14, E, 14. And this one is 4, 5, 6, 7. If it is denary, then this is basically 126. All right? 126, 64, 32, 96 and 16, 112 and 8, 120 and 124 and 126. So if it is binary to hexadecimal, so we will break it. We will use this 1, 2, 4, 8 and 1, 2, 4, 8. And if it is binary to denary, we will use 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Similarly, if it is denary to hexadecimal, so let's say it is 39. So 0, 0, 1, 32. 32, what remains? 39 minus 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Cancel 16, cancel 8. 7 minus 4, 5, 6, 7, 3. 3 minus 2, 1. And here we go. So 32 plus 4, 36, plus 2, 38, plus 1, 39. Now convert it to hexadecimal. So this would be 2 on the left and 7 on the right. So 39 in hexadecimal takes shape of 2 and 7. Let's say it is A9. So A is 10, 1, 0, 1, 0. And 9 is 8 and 1, 9. तो अब हम जब इसको मिलाकर पूरा आखिर तक पहुंचेंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो हमारे पास इसका डेनरी कन्वर्जन आ जाएगा. So this is 128 plus 32, 160. 128 and 32 is 160, 168 and 169. So this is 169. So these are total 6 conversions. Binary to denary, denary to binary 2, hex to binary 3, binary to hex 4, hex to denary through binary करते हैं हम 5, and denary to hex 6 थ्रू बाइनरी. ठीक है. सो ये हम कन्वर्जन्स करेंगे. यहाँ पर हमने इस चीज़ को अवॉइड किया है कि हम डेनरी टू हेक्साडेसिमल डायरेक्ट कन्वर्ट करें, बिकॉज इन एग्जाम कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड.
So in order to convert denary to hexadecimal, we would have to divide by 16. And in order to convert from hexadecimal to denary direct, we would have to multiply by 16 to power 0, 16 to power 1, 16 to power 2. So that would be basically difficult without calculator. So it is advisable that you convert hexadecimal to binary and from binary to denary. Similarly, if you want to convert from denary to hexadecimal, go through binary way. So this is your hexadecimal to binary and denary conversion. This is it.